and welcome to Thorough Newspaper Analysis. Today is 26th of April and this entire video series it's brought to you by LawSikho. See, as far as the agenda for today is concerned, at the very outset itself, we're going to have an understanding of an Indian Express editorial, the title of which is Renewed Protest by Wrestlers and Why the Supreme Court is Intervening. देखिए एसेंचुअली क्या हुआ था कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उन पर कुछ विमेन रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के काफ़ी सिवियर एलिगेशंस लगाए थे और इसी के रिस्पेक्ट में हमारी जो कंट्री के कुछ सेलिब्रेटेड रेसलर्स हैं दे आर प्रोटेस्टिंग. बीच में ये प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ हो गया था बिकॉज एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी, तो इसी रिस्पेक्ट में एंड देन बिकॉज उस कमेटी का जो रिस्पॉन्स है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, तो अब जो है रेसलर्स हैं उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट को रिलॉन्च कर दिया है. So इसी के रिस्पेक्ट में we are going to have an understanding of what is the protest, what are the allegations against the president, what are the demands of the wrestlers, and what has the Supreme Court said in this matter so far. Also, because we are judiciary aspirants or we are looking forward to attempting any competitive exam in the field of law, so it becomes all the more important for us to have an understanding of the legality of some of the provisions. तो इसके रिस्पेक्ट में हम briefly बात करेंगे. एक तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में जो कि आईपीसी में प्रोविजंस है, सेकेंडली प्रोविजंस इन द आईपीसी इटसेल्फ गवर्निंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड थर्डली जो 2013 का एक्ट है जिसको हम पॉपुलरली पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं उसके रिस्पेक्ट में कुछ बात करेंगे. सेकेंडली हमारे पास सेगमेंट है न्यूज़ अपडेट का जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट्स को डिस्कस करते हैं. And thirdly, we have the legal news update segment where we take up important developments of the day in the field of law. So with this, let's dive into the TNF for today and starting off with the editorial. See, the title of the same is Renewed Protest by Wrestlers and what the Supreme Court has stated in this particular matter so far. Now, as far as the framework of this particular editorial is concerned, so see, this is how we are going to deal with it. पहले तो हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरवेंशन है सो फार एंड देन वी गोइंग टू डाइव इनटू द एंटायर टाइमलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट. ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, कमेटी का गठन कब हुआ, कमेटी की रिपोर्ट का क्या कहना है, एंड देन हम बात करेंगे कि इस मैटर में कंप्लेनेंट्स कौन है, हु आर दी प्रोटेस्टर्स प्राइमरीली एंड उनकी एलिगेशन क्या है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन एंड ऑल्सो वो क्या डिमांड कर रहे हैं, एंड थर्ड लास्टली वी गोइंग टू हैव अ लुक एट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इन दिस पर्टिकुलर मैटर सो फार. So starting off with the Supreme Court's involvement, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास 7 women wrestlers ने it presented a plea before the apex court जहाँ पे उन्होंने essentially ये बताया कि they have been approaching the police but पुलिस जो है वो FIR नहीं लॉन्च कर रही है इस पूरे मैटर में. तो they want the Supreme Court's assistance here, they want the court to give directions, appropriate directions with respect to this entire matter. तो इसी के रिस्पॉन्स पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किए हैं. So this is what has transpired before the apex court. The Supreme Court has issued notices to Delhi police on a plea by 7 women wrestlers जिन्होंने सीख किया है registration of FIR against Wrestling Federation of India President Chief Brij Bhushan Sharan Singh, whom they have accused of sexual harassment and criminal intimidation over a period of a decade, 2012 से लेके 2022 तक. The wrestlers on April 21 उन्होंने कुछ separate complaints लॉन्च करी थी before the police, but no action was taken in respect of the same. अभी संडे को 3 top wrestlers जिनकी pictures आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, one is Bajrang Punia, Vinesh Fogart and Sakshi Malik. They have relaunched their protest and the top court is going to hear this petition on Friday, which is the day after tomorrow. The hearing is going to be resumed. Now see, जो अभी हम इस प्रोटेस्ट की अगर वो देखें द वाई ऑफ इट, तो एसेंचुअली हुआ क्या था इन द मंथ ऑफ जनवरी इस साल की शुरुआत में विनेश फोगाट जो कि एक काफ़ी सेलिब्रेटेड रेसलर है हमारी कंट्री की, उन्होंने हमारी नेशन को काफ़ी मेडल्स भी शी हैज़ गॉटन प्रोक्योर्ड फॉर अस. सो एसेंचुअली उनका ये कहना है कि उनको कुछ कॉल्स आए बाय हर फेलो रेसलर्स इन्वॉल्विंग वेरी यंग रेसलर्स ऑल्सो, और इनका ये कहना था कि there is unsafe environment at the national camp in Lucknow, and they shared their stories whereby they have stated that they have been sexually harassed by the president at his bungalow and also at other venues. And also उनका ये भी कहना है कि apart from the president Brij Bhushan, उनके अलावा
बहुत सारे कोचेस हैं जो फेडरेशन के, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो इसीलिए फिर जो विनेश फोगाट है अलॉन्ग विद बजरंग पूनिया एंड साक्षी मलिक, इनको ये लगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द फेलो रेसलर्स एंड फॉर द dignity of the game also that this entire matter it is brought in the public arena and इस मैटर को फ्लैग करे ताकि जो ऑफेंडर्स है दे आर मेड टू पे बाय द लॉ। तो इसी के रिस्पेक्ट में फिर उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया और इस प्रोटेस्ट में उनकी काफ़ी सारे जो फेलो रेसलर्स है दे आर ऑल्सो बीन सपोर्टिंग इट ऑनलाइन एंड अदरवाइज ऑल्सो, एंड उसके अलावा काफ़ी सारे पोलिटिकल लीडर्स एंड इंक्लूडिंग काफ़ी पंचायत लीडर्स जो है दे आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड एंड सपोर्टिंग दिस प्रोटेस्ट। अगर हम कंप्लेनेंट्स की बात करें तो देखिए इनकी आइडेंटिटीज जो है वो रिवील नहीं हुई है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 2012 से लेकर 2022 तक की कुछ कंप्लेंट्स हैं जो सामने आई है और आइडेंटिटीज तो रिवील नहीं करी है, बट इसमें ये जो कंप्लेनेंट्स हैं इनमें कुछ माइनर गर्ल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। अब जो अगर हम ये देखें कि इनकी एलिगेशंस क्या है मेजर, तो दैट इज टू फोल्ड एलिगेशंस है। एक तो that the wrestlers they have alleged financial mismanagement and arbitrary actions in the functioning of the federation। उनका ये कहना है कि जो प्रेसिडेंट है और जो वो जो गवर्न करे इस फेडरेशन को, तो वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं फंड्स का एंड वो काफ़ी आर्बिट्ररी तरीके से एक्ट कर रहे हैं पूरी फंक्शनिंग इस फेडरेशन की। और सो उनका कहना है कि ही इज़ बीन क्रिमिनली इंटिमिडेटिंग पीपल and of course the serious allegation of sexual harassment are there. The complainants they have cited instances that took place as early as 2012 and as latest as the last year, which is 2022, and they claim some of them occurred in his residence, the residence of the president, and during tournaments in India and abroad as well. According to a letter which is sent by the sports ministry to the Indian Olympic Association, जो कि मंडे को भेजा गया था, wrestlers have leveled allegation against not just Brij Bhushan but also other coaches जिनकी आइडेंटिटी हाउएवर अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है, उनको रिवील नहीं करा गया। अब अगर हम ये जो फेडरेशन इनके चीफ की बात करें एज टू हु इज ही, तो ही इज अ 6-time MP since the year 1991 and 5 बार he has been representing BJP, so party political party itself। and इनके 2019 के अगर हम जो पार्टी जो एफिडेविट है एप्लीकेशन के साथ जो लगाते हैं इलेक्शन एफिडेविट, उसमें ही stated that he has been one of the accused in the Babri Masjid demolition case, उसमें उनका नाम आया। He has been a strong supporter of the Ram Janmabhoomi movement, the entire movement, and अभी वो जो है he has a very prominent name in the federation in making important decisions here। Now let's understand what the protesters are essentially demanding। तो एक तो वो सबसे जो उनकी बड़ी डिमांड है वो है कि lodge FIR against him, and secondly they are saying that he should be removed from the charge जो अभी उनके पास पोजीशन है, एंड FIR में जो चार्जेस हैं वो पॉक्सो एक्ट की भी इंक्लूड होने चाहिए बिकॉज माइनर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, एंड दे आर ऑल्सो डिमांडिंग हिज रिमूवल एंड द फेडरेशन शुड बी डिसॉल्व। दे हैव स्टेटेड दैट दे आर गोइंग टू कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट जब तक कि ये जो पूरा मैटर है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि जनवरी में जब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया था तो गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी अश्योरेंस दी थी। इस रिस्पेक्ट में 5 मेंबर कमेटी का गठन भी करा गया था जिसको हेड कर रहे हैं द बॉक्सिंग लेजेंड ऑफ आवर कंट्री MC मेरी कॉम, एंड इस कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया था टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, बट ये सबमिशन नहीं हुई एंड उन्होंने कुछ और टाइम सीख किया एंड इस मंथ के बिगिनिंग में ही द रिपोर्ट वाज सबमिटेड। हावेवर क्योंकि इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करा गया था तो प्रोटेस्टर्स जो है वो काफ़ी अग्रीव्ड हुए इस चीज़ से और दे लॉस्ट देयर फेथ इन दिस एंटायर मैकेनिज्म एंड हेंस दे हैव रिकॉल्ड देयर प्रोटेस्ट। तो अब जो इसकी डेवलपमेंट रिसेंट मंडे को सामने आई है जिसमें कि गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को एग्जामिन करा है, इसकी स्क्रूटनी के बाद उन्होंने कुछ जो मेजर फाइंडिंग्स है उसको पब्लिक के सामने रखा है। दे शेयर्ड द मेजर फाइंडिंग्स फॉलोइंग अ प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी, जिसमें कुछ बहुत ही मैटर जो फ्लैग सामने आया वो है कि ब्रॉड प्रोसीजरल लैप्सेस हैपेंड एट द फेडरेशंस एंड such as the absence of an internal complaints committee and the lack of transparency being two of them। एक internal complaints committee क्या होती है ये हम आगे समझेंगे जब हम 2013 के एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम ये बात करते हैं कि जो फेडरेशन जो गवर्नमेंट है उनका क्या रिस्पॉन्स था इस पूरे मैटर में। तो देखिए एज फार एज ब्रिज भूषण इज कंसर्न्ड, उनका कहना है ही हैज ऑफ कोर्स रबिश्ड ऑल द एलिगेशंस एंड ही सेड दैट दीस एलिगेशंस आर बेसलेस, एंड एज फार एज द फेडरेशन इज कंसर्न्ड इट हैज डिनाइड क्लेम्स ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड आर्बिट्रेरीनेस इन इट्स फंक्शनिंग। एंड गवर्नमेंट का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो गवर्नमेंट ने जनवरी में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई जिसकी रिपोर्ट भी अप्रैल में रिलीज हुई है। So this is the entire matter. Now we proceed with the relevant provisions। तो पहला आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझे तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है किसी को डराना या धमकाना
किस पर्पस के लिए? ताकि उनसे कोई ऐसा काम करवाया जाए जो कि वो लॉ के द्वारा बाउंड नहीं है, या फिर कुछ ऐसी ओमिशन करवाई जाए जो काम दे वर लीगली बाउंड टू डू बट दे हैड टू omit. Now let's understand it. So see, whoever threatens another person, and वो threaten क्या कर रहे हैं, that I'm going to injure your person, I'm going to injure you, I'm going to injure your reputation, I'm going to damage your property, or I'm going to cause damage to your property, to the reputation, or injure the person of someone in whom you have an interest. So let's say the injury or damage to my reputation or property is caused, or the damage to the reputation and injury to a family member of mine is caused. अगर मुझे ये threaten मिलता है, किस लिए मिलता है? So as to cause that person to do an act which he is not legally bound to do, to omit any act which that person is legally entitled to do, as a means to avoid the execution of such threat, and that is called criminal intimidation. There is an explanation which says that a threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested, so that is also included in this section. As far as the punishment for that is concerned, it ranges from, it goes to 2 years or with fine or both. Now see, अगर if the threat जो है it is to cause death or grievous hurt, then the punishment it may, or it is to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offence which is punishable with death or imprisonment for a term which may extend to 7 years, or it is to impute unchastity to a woman, then the punishment would either be of either description and it may extend to 7 years or with fine or both. So these are the two terms of punishment, 2 years or fine or both, or 7 years or fine or both. Now moving on, this provides for the provision of sexual harassment. The relevant section is section 354A. This was added by the 2013 amendment, and it defines as to what would constitute an act of sexual harassment, and then further it provides for punishment for the same. Now let's understand the 2013 Act. देखिए essentially ये जो act है, it came after the Supreme Court's decision or the guidelines that were laid down in the case of Vishakha, and essentially अगर हम इसके important provisions की बात करें तो इस act में एक तो बहुत ही categorically define कर दी गई है सारी terms as to what is a workplace, who is going to be an employer, who is going to be an employee, who is going to be an aggrieved person, and also what constitutes sexual harassment, and then it provides for कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्टन कमिटीज. तो अगर तो आपका वर्क प्लेस जो है उसमें 10 एम्प्लॉयज से ज़्यादा है तो यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी बाय द नेम ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. उसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो जिसके भी इस एक्ट में उसके बारे में बताया कि कितने विमेन होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, एंड उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए. एंड देन जब भी अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट आती है तो वो जो कमिटी है इट इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग इनटू इट, इंक्वायरिंग इनटू इट, एंड देन सजेस्टिंग क्या करना चाहिए आगे. तो देयर आर सर्टन रेपरकशंस. अगर जो ऑफेंडर है उसके साथ क्या हो सकता है, दिस आर मेंशन्ड हियर. इंटरिम जब इंक्वायरी चल रही है उस टाइम पे भी व्हाट कैन बी डन, दैट इज ऑल्सो बीन मेंशन्ड. सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लोकल कंप्लेंट्स कमिटी. देखिए वो जो वर्क प्लेसेस जहाँ पर 10 से कम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, तो इनके लिए ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जो हेड है वो इसकी पूरी ओवरऑल वो रिव्यूइंग देखते हैं, एंड लोकल कंप्लेंट्स कमिटीज मेड फॉर दैट पर्पज. तो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या ऐसे वर्क प्लेस है जहाँ पर कि 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो वो अपनी कंप्लेंट जाके लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को दे सकते हैं, एंड देन द मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड फॉर द सेम कि कैसे कंप्लेंट का रिड्रेसल होगा. So with this, we have come to the next segment for today, which is the national news segment. So now the first update in the national news segment, it is with respect to the death or the demise of Parkash Singh Badal. He has been the Chief Minister of Punjab, and he became the Chief Minister for the first time in the year 1970. He was one of the youngest Chief Ministers. He headed a coalition government. He held the government for a term of 4 times, ranging from 1977 to latest 2012, and in the year 1977 he briefly joined the Morarji Desai's government at the centre as the agriculture minister. Moving on to the next update, this is with respect to Prasar Bharati celebrating 100 episodes of Mann Ki Baat. Prasar Bharati, it is hosting a national conclave on Mann Ki Baat at 100. This is done in order to celebrate the episode of Prime Minister's monthly radio show, which is popularly known as Mann Ki Baat. The inaugural session of the conclave, it is going to be graced by the Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and also by
Shri Anurag Singh Thakur, who is the Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports. Now moving on to the next update, this is with respect to Youth 20 Pre-Summit. The meeting, it is going to focus on 5 Youth 20 themes, including climate change, peace building and health. The event, it is going to provide a platform for open discussions and interactive sessions to address the challenges that are being faced by the young people of the nation and a roadmap for their development further. Now this update, it is with respect to the 6th edition of Advantage Healthcare India. India is striving for equitable access to healthcare for all and to reduce disparities in healthcare availability across the globe during its G20 presidency under the vision of One Earth, One Health. This summit, it is going to witness 125 exhibitors and around 500 hosted foreign delegates from across 70 countries. Now this has brought us to the next segment or next update, which is with respect to the conclusion of fourth meeting of India-Mozambique Joint Defence Working Group. So the two sides, they discuss wide-ranging issues, including military training and courses, exercises, medicine and capacity building with a view to deepen the defence engagement. The next update is with respect to unveiling of new gates at the iconic Sydney Cricket Ground. It has unveiled these gates on the name of Sachin Tendulkar and Brian Lara. This has been done to celebrate the 50th birthday of Tendulkar and 30th anniversary of Lara's 277 at the ground. And the next update, it is in the segment of international news for today. So India and Ukraine, they are to set up a chamber of commerce. The chamber of commerce, it is going to be set up in an effort to strengthen the commercial status between the two nations. And the chamber, it will also work as an opportunity to increase further opportunities of investment and cooperation in industries, including infrastructure and power with the help of the Ukrainian government. In 2021, the bilateral trade between the two nations, it equaled 3.45 billion US dollars. Now the next update in the segment of international news update itself, it is with respect to Mongolia refinery to be built by India by the year 2025. So this is going to be first oil refinery from Mongolia. The development, it has strategic ramification because Russia is the only source of energy imports for the country of Mongolia, and the refinery, it will satisfy 70% of the domestic demand for the country. Now this update is with respect to London Marathon, and Kelvin Kiptum, a 23-year-old athlete, he has won this year's London Marathon and he posted the second best time in history for the distance. The next update is coming from US. So Joe Biden, he has announced his candidature for the second term. Biden described Republican platforms as threat to American freedom. He vowed to fight alleged efforts to limit women's health care, cut social scrutiny, and ban books. And this has brought us to the legal update segment for today, with the first update coming from the Honorable Top Court. So see, the Supreme Court has recently held that unnatural death of wife in matrimonial home within 7 years of marriage in itself, it is not sufficient in order to convict a husband for dowry death. So the Supreme Court has observed that the mere death of the deceased being unnatural and the fact that the death has occurred within the bounds of the matrimonial home within a span of 7 years of marriage, it is not sufficient to convict the accused under Section 304B and Section 498A of the IPC. The name of this particular case is Charan Singh alias Charanjit Singh versus the state of Uttarakhand. Moving on, this update is again coming from the Honorable Top Court. So the Supreme Court has held that the first and the second appeal arising out of two suits with same parties and common property in dispute, they cannot be clubbed together. The Apex Court recently held that the first appeal and the second appeal arising out of two proceedings, they cannot be clubbed together and disposed of by a common judgment, even if the parties are the same and the property in dispute is also common.
This is because the considerations under section 96 of the CPC and section 100 of the CPC, they are altogether different, because for a second appeal you need additional criteria to be fulfilled as well. There has to be a substantial question of law that has to be involved, and the same has to be framed. So there are certain differences between these two legal provisions. So owing to that, this cannot be clubbed together. The name of this particular case is Seethamal and another versus Narayan Swamy and others. So with this, we've come to an end for the TNA for today. In case you want to get access to the slides that have been used in this TNA, or the free material, study material that LawSikho has curated for you, I would encourage all of you to join our Telegram channel. For the same, you may click on the link which has been provided in the description of this video, or you may scan the barcode here. These are the point of contacts in case you want to get in touch with LawSikho for any purpose. Also, the quiz based on the TNA for yesterday, it is provided in the link of today's video. Kindly go ahead and attempt the same. Thank you for being with us.